Hello students, welcome for another video, and in this video we are going to discuss about the flower. Flower, yes, this beautiful flower. And in this video we are going to learn important terms of flower. Let's discuss. This is axillary flower. You can look in the diagram that this flower grow in this axis. This flower grow between the axis of these two branches. This is called axillary flower. It is easy to learn. A for axil and A for angle. The flower which grow in the angle or between the two branches. Another one is terminal flower. T for terminal, just for learning I am telling you. T for terminal and T for top. The flower which grow on the top. In this diagram, in this picture, you can notice that this flower, this white flower is growing on the top of the twig. This is the twig. This one is the twig. And this flower is at the position of the top. Another one is solitary flower. Solitary flower is a flower which grows singly on a twig. This is twig, okay, and this is a flower. There is one flower on one twig. This is called solitary flower. Again, easy to learn. S for solitary, S for single. Next is pedicellate flower. This one is pedicellate flower. This is pedicel or stalk. This flower is attached with the help of stalk or pedicel with this twig. This is called pedicellate flower. Another one is sessile flower. In this, no twig is present. Flower is without stalk. No pedicel is present, or flower is without stalk. You can see these are the flowers, and these flowers are arranged on this twig directly. No stalk, no pedicel is there. When flower grow in cluster means group में जब वो grow करते हैं, that is called peduncle. Peduncle कैसे याद रख सकते हो? बहुत सारे अंकल होते हैं ना, चाचा जी भी अंकल, मामा जी भी अंकल, फूफा जी भी अंकल, पापा के फ्रेंड, मम्मी के फ्रेंड, सब कोई दादू के फ्रेंड, सब कोई अंकल ही होते हैं. तो बहुत सारे अंकल होते हैं. तो peduncle मतलब when flower grow in cluster, group में. टर्म्स टू रिमेंबर में आगे चलते हैं. दिस वन इज ब्रैक्ट फ्लावर. ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट इज अ कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज बोगनविलिया. I hope you have seen in your parks, in your school also. In a school we have pink, white and I think orange color bougainvillea is there. And many of you might have in your home also. And this one is the flower. ये पूरा flower नहीं है. This part is only flower, and these are the leaf-like bracts, and these flowers are also known as bracteole. Let's see naked flower. Naked flower is a flower in which there is no petal and sepals. Naked का मतलब क्या होता है? Naked means uncovered thing. When the flower is not covered with petal or sepal, that is called naked flower. This one is perianth. Perianth is a flower whole in which you can't distinguish between petal and sepal. In this flower, you can notice, these structures are present. Being white in color, you might thinking that it is petal, but as the origin, they are sepal. So you can separate whether it is a petal or a sepal. This kind of flowers are known as, holes are known as perianth, and the unit of that perianth is tepal. The unit is tepal. Unit का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे corolla होता है flower के अंदर, तो corolla is a complete whole, and one unit of corolla is petal. Calyx is complete whole. One unit of calyx is sepal. Similarly, perianth is a whole. One unit is tepal. It is present as spider lily. In fact, this is a spider lily, right? Next topic is floral symmetry. What is symmetry? I think you read about symmetry in maths.
symmetry is the position in which, with the help of line of symmetry, we can divide the object into two parts, and these two parts are the mirror image. So similarly in flowers we can have floral symmetry. It is described whether and how a flower in particular, its perianth, can be divided into two or more identical images or mirror images. Look in this diagram, this is actinomorphic. Actinomorphic kind of symmetry है ये, or it is also known as radial symmetry. In this you can notice that flower is divided into two equal parts. One, ये line of symmetry. एक बात ध्यान रखिए, you have to mention that this line of symmetry or vertical section must pass through the center. If you will not mention it will must pass through the center, your definition is wrong. क्योंकि इधर देखिए, आप फ्लावर को तो यहाँ से भी ऐसे डिवाइड कर सकते थे ना, then it will not divide into two equal parts, it will not divide into two halves, it will not divide into mirror image. इसलिए if you are writing mirror image in two equal halves, उसके साथ में if you are writing that that line of symmetry must pass through the center, then it become the complete definition. It occurs in mustard, brinjal and datura. So next time when you go in sarson ka khet, then find out some mustard flower and just have a look. Yes, are they have radial symmetry, are they have actinomorphic, or you can divide them in two equal parts passing from the center through the line of symmetry, and that line of symmetry can pass from any direction. No specific direction is there. You can see one, आप ऐसे डिवाइड कर सकते थे, आप ऐसे डिवाइड कर सकते थे, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, और आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे. Another one is zygomorphic. ये वैसे for your kind information, it is a pea flower, और ये pea family में ही होता है. Pisum sativum इसका scientific name है. This is known as zygomorphic or bilateral symmetry, when a flower can be divided into two similar halves along only one plane. Okay, along only one plane. This is only a line of symmetry which can divide flower into two equal halves. A flower can be divided into two mirror images. There is no another line of symmetry. आप इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं in case of zygomorphic, right? Next we have asymmetric or irregular, where is no symmetry. They can't divide from any of the symmetry. ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, कैसे भी नहीं. Example, Sina. Okay. Let's discuss position of floral leaves on the thalamus. What is thalamus? Thalamus is the basal swollen part of the flower. This one is the basal swollen part of the flower. This is thalamus. And in thalamus, there are three kind of possibilities are there. One is hypogynous, one is perigynous, another one is epigynous. Hypogynous means superior ovary. When the position of ovary is superior and petals, sepals and stamen, they arise from below the base of the ovary. ओवरी के नीचे से निकलते हैं. सिर्फ ओवरी का पोजीशन जो है वो ऊपर होता है. स्टेमन्स एंड पेरियंथ हाइपोगाइनस, मतलब गाइनोशियम के नीचे से निकलेंगे. पेरीगाइनस, पेरी मीन्स चारों तरफ, बाउंड्री. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पेरीमीटर. पेरीमीटर इज द बाउंड्री. सो पेरीमीटर में क्या होता है, पेरी में क्या होता है, इट इज अ बाउंड्री, एंड इन दिस बाउंड्री you can't sorry, in this boundary, ovary is there, petals are there, stamens are there and sepals are there. All these, see, this is ovary, this is sepal, this is petal, this is stamen, they all originate from this point. ये यहाँ से ही originate हुए हैं. So this is a perianth. Superior ovary, stamens and perianth, perigynous. ovary की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होएगी, लेकिन
बाकी चारों चीज़ें जो हैं, स्टेमन्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, उसके चारों तरफ से निकलते हैं, बाउंड्री से निकलते हैं. नेक्स्ट इज एपिगाइनस. एपिगाइनस में क्या है, ओवरी का पोजीशन नीचे है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज अबव द ओवरी. बाकी जो है वो ओवरी के ऊपर है. दैट इज कॉल्ड एपिगाइनस. सो इन दिस वी हैव लर्न देयर आर 3 काइंड ऑफ स्टेजेस: hypogynous flower, perigynous flower, epigynous flower, and hypogynous ovary is superior, perigynous ovary is half superior, and peri मतलब होता है चारों तरफ बाउंड्री से निकलते हैं. And the last one is epigynous. Epigynous means the position of ovary is inferior. Next is there are certain terms for incomplete flower. First is pistillate. Pistillate means only pistil is functional. Plant flower के अंदर there are 2 parts. One is stamen, one is pistil. Stamen is male reproductive part and pistil is female reproductive part. Pistil यदि functional है तो उसका नाम क्या होगा, pistillate. जैसा नाम वैसा काम. तो नहीं, जैसा काम वैसा नाम, सॉरी. तो पिस्टिल फंक्शनल है तो उसका नाम क्या हो गया, पिस्टिलेट. एग्जाम्पल ऑर्किड्स में आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर पिस्टिल फंक्शनल है बट स्टैमन्स जो है वो फंक्शनल नहीं है. अनदर वन इज स्टैमिनेट. ओनली स्टैमन इज डेवलप, स्टैमन इज फंक्शनल. पिस्टिल आइदर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट इट इज नॉन फंक्शनल. यू कैन लुक हियर, दीज आर द स्टैमन्स एंड दीज स्टैमन्स आर फंक्शनल. अनदर वन इज न्यूटर. न्यूटर मीन्स न्यूट्रल है. Neither stamen is there, no pistil is, or nor pistil is there. Both staminate and pistillate flower is absent. It is ray floret of sunflower और ये उसके अंदर present होता है. Unisexual flowers क्या होते हैं? Unisexual flower are the flower in which one sex is present, either the male flower is present or the female flower is present. Now there are 2 conditions. One is the dioecious condition and one is the monoecious condition. Dioecious means there are 2 different plants. 2 अलग अलग plants होंगे dioecious में. Basically dio माने होता है, di माने होता है 2. So one is the male plant and one is the female plant. This is the male flower, this is the female flower. papaya में होता है, banana में होता है. Okay? This is monoecious. Monoecious plant के अंदर क्या होता है, flower, both male flower and female flower is present, both are present on the same plant पर होते हैं. जैसे this one is a male flower of the maize. ये maize का है, मक्के का है. देखो आपको मक्का नज़र भी आ रहा है. and this one is the female. तो जो female flower है उससे मक्का बनता है और ये दोनों जो हैं वो एक ही same plant पर होते हैं. Male flower is on the top and female flower is on the lower side. But it's not for every time that in every monoecious plant, male plant should be on the top. It's not necessary. Now have a look on petals and sepals. This already we have discussed. Petals, there are 2 conditions, polypetalous and gamopetalous. In polypetalous, petals are free. So in this you can count 1, 2, 3, 4, 5 petals and you can separate each of them. So these are polypetalous. In gamopetalous all these petals are fused. ये देखिए आपस में ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, पीछे से भी जुड़े हुए हैं, अब मैं आपको नहीं दिखा सकती. And gamosepalous means, gamo means united and sepalous means sepals. In this sepals are united, all these sepals are united. आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं. In polysepalous all sepals are free. आपको यदि अभी आपके घर में कोई फ्लावर्स हैं या if it is allowed nearby your house to go and park or there and like that, so try to observe different kind of flowers. You will notice that in polysepalous all the sepals are free. आप इसको सबको अलग अलग करके निकाल सकते हैं, right? Androecium is the male part of male stamen of the flower, and in this stamen is present in this one is anther, this is connective tissue, and this one is filament. There are different conditions. It's not necessary to learn all these conditions. I could understand there are lot many terms,
but monodelphous I will suggest to learn, diadelphous and didynamous and tetradynamous. These are very important. ये आपको पता होने चाहिए. Monodelphous, this condition occur in China rose. All these stamens are connected on a one staminal tube. ये सारे के सारे एक ही ट्यूब पर अटैच्ड हैं. This is called monodelphous. ये चाइना रोज में होता है, आसानी से आप अपने घर पर देख भी सकते हैं. दिस इज पी, ये पी के अंदर होता है. इन पी वी हैव 9+1 अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन, मतलब 1 स्टेमन इज देयर एंड 9 स्टेमन्स आर टुगेदर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and there are two groups. Di means 2, adelphous means group. Two groups are there in the manner of 1+9. Polyadelphous, poly means free, adelphous means group. इनमें stamens are free. ये जो stamens होते हैं ये free होते हैं and filaments are united. वो नीचे से united हो सकते हैं. ये castor में होता है. Not necessary to learn. If you could learn, it's really good. Syngenesis condition is the condition in which filaments are free from each other. See, look here. These filaments are free, but these anthers are jointed. This is called syngenesis condition. It occurs in sunflower. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा तो आपको समझ भी आएगा कि ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा. This condition is synandrous. In this synandrous condition, these stamens are united. ये आपस में united है and both by their filament and anther. ये ऊपर से भी united है और ये नीचे से भी united है. Synandrous, syn माने होता है synthesized, जुड़ना. एंड्रस मतलब ग्रुप, सब ग्रुप जुड़े हुए हैं. गिनैंड्रस, गिन मतलब गाइनोशियम, एंड्रस मीन्स एंड्रोशियम. गिनैंड्रस मीन्स इन विच गाइनोशियम इज अटैच्ड विद द एंड्रोशियम. गाइनोशियम और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं. दिस वन इज डायडायनमस. Didynamous. There are two groups, di, 2+2. So 2 stamens are long and 2 stamens are short. This condition is called didynamous. This one is tetradynamous. Tetradynamous means tetra means 4 and di means 2. Tetra means 4, di means 2. 4+2 group. 1 2 3 4. 4 are long stamen and 2 are small stamen. This is called tetradynamous condition. This is common in mustard. Next is type of gynoecium. We have two kind of gynoecium. One is apocarpus, in which all carpels are free. You can notice here all carpels are free. Syncarpus, in which carpels are united together and ये जो carpels हैं ये आपस में united हैं. Example for apocarpus, rose and lotus. Example for syncarpus, mustard and hibiscus. Hibiscus क्या है? China rose. What is placentation? Arrangement of placenta in ovary called placentation. Placenta क्या है? Placenta is a tissue which provide nourishment to flower. Definition is important. Not necessary that you learn all these kind, but थोड़ा idea होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया है. Marginal का मतलब ये P में होता है. All ovules are present on the margin. ये margin पर present है. Axial, placenta is axial in position. Axis मतलब center में है. And all these locules, इन chambers को locules कहते हैं. इन chambers को, this chamber. और ये जो red है इसको ovule कहते हैं. Periphery, parietal, periphery. Periphery क्या होता है? Peri मतलब perimeter से आया हुआ है, boundary. They are present on the periphery. उसकी boundary पर present होते हैं, right? ये ovule, ये इनके अंदर ये ovule. फ्री एंड सेंट्रल, सेंटर में बिल्कुल फ्री है, वो कोई भी पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकते हैं और इनके अंदर सेप्टा नहीं होता. व्हाट इज सेप्टा? सेप्टा, लुक हियर, दिस वन इज सेप्टा, दिस वन इज सेप्टा. ये सेप्टा नहीं होता है. बेसल, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी. ये बिल्कुल बेस पर होते हैं. सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट एंड इट इज वेरी कॉमन इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. वैसे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड सेम फैमिली से हैं. This is called placenta. This one is placenta. This one is placenta. ये बिल्कुल बेस पर होते हैं. सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट एंड इट इज वेरी कॉमन इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. वैसे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड सेम फैमिली से हैं.
What is inflorescence? Arrangement of flower on the twig is called inflorescence, and in this there are two kind of flowers, one is racemose and one is cymose. I think थोड़ा सा शायद वीडियो में कट जाएगा, कोई बात नहीं, I will give you another note for that. रेसिमोस एंड साइमोस. इन रेसिमोस जैसा वर्ड से क्लियर है, रेस से आया है ये टर्म, एंड इन रेसिमोस यंग फ्लावर इज ऑन द टॉप. यदि हम कंपैरिजन करें, डोंट टेक इट अदरवाइज, यदि हम कंपैरिजन करें, वी हैव वन यंग पीपल एंड वन इज द ओल्ड पीपल. वैसे हमारे ओल्ड पीपल बहुत एक्टिव होते हैं, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम यूजिंग हियर, यंग बच्चे जो होंगे वो रेस में आगे होंगे, तो टॉप पर होंगे. सो रेसिमोस क्या है, जिसमें यंग फ्लावर टॉप पर होता है, साइमोस में ओल्ड फ्लावर टॉप पर होता है. इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो. जब यंग फ्लावर टॉप पर है तो ये तो कंटिन्यू करते ही रहेगा ना, नए नए फ्लावर आते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा. साइमोस में यदि ओल्ड फ्लावर टॉप पर है तो ये तो ब्रांच यहीं खत्म हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा. इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड होएगा, इसमें ग्रोथ लिमिटेड होगा. They are arranged in acropetal succession, मतलब young flower on the top, old flower at the base. There is in a basipetal. Basically, old people are on the top and young flower is at the bottom, right? Okay, self pollination के लिए जो एडवाइजरी कंडीशंस हैं, दे आर टू. वन इज होमोगैमी, अनदर वन इज क्लिस्टोगैमी. होमो मीन्स सेम. इट रेफर्स टू द मेचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम. सो बोथ ऑफ द गैमीट्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के अंदर जो भी गैमीट्स बनते हैं, दे विल मेच्योर ऑन द सेम टाइम. क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टो मीन्स क्लोज, in which flower is closed and they do not open at the time of fertilization. That's why there will be no choice except for self pollination, because pollen grain will transfer within the flower only. For cross pollination there are two conditions. One is protandry. Pro means pehle, andry means androecium. Androecium mature before the gynoecium. You can see, look here, stigma is receptive and anther is ready to shed its pollen. Protogyny, in which gynoecium mature first. Gynoecium is ready but stamen is closed. Anthers यहाँ पर closed हैं. They are not ready to spread their pollen. Condition for cross pollination. This is very important condition. Heterostyly, and this one is hercogamy. In heterostyly, flower is having different style. See, this is the style. Okay, in this style is longer and stamen is shorter. In this style is shorter and stamen is longer. अब यहाँ से stamen से ऊपर पोलन ग्रेन्स पहुँचाना मुश्किल है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ पहुँचाना मुश्किल है, ये जनरली बाहर गिर जाते हैं. ओके, इसलिए इनके पास में कोई चॉइस नहीं होता, ये जनरली क्रॉस पॉलिनेशन से ही पॉलिनेट होते हैं. हर्कोगेमी इज अ कंडीशन इन विच सम स्ट्रक्चरल फीचर इज प्रेजेंट. कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, विच डज नॉट अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन. लास्ट इज, दिस इज पी फ्लावर. इन पी फ्लावर there are 5 petals and they are very specifically arranged. We have discussed they have bilateral symmetry. This is bilateral symmetry, and they have one big petal that is called standard, 2 small petals, these are called wings, and 1 keel. This one is stigma. Look here, this one is stigma, and in this diagram they have not shown very well, but this one is 1 androecium and here will be 9. 1 2 3 4, इसके पीछे 5 और होते हैं जो हमने पिछले वाले में देखे भी थे अभी. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, दे हैव सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज दे मैच्योर ऑन द सेम टाइम. सो इट्स इजी टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. So before that I have shared 2 videos with you, and I hope you have seen all those videos, and still if you have any doubt you can take your doubt
and I will share another PDF with you in which we can read these terms further. Till then, thank you.